The southern part of Punjab is also known as Southern Punjab, and some observers say it's expected to become a mixing bowl once the Pakistan-China Economic Corridor, which a lot of people commonly call as CPEC, becomes operational. These observers consider the area part of Pakistan's emirate of resources and spans from south in Sindh to north. This vast resource-rich region encompasses Balochistan province also, where the Gwadr's deep sea port is located. I reached out to some Pakistanis for their views on steps being taken to focus on South Punjab. A new administrative unit or maybe a province is in the works, but the jury seems to be still out there. Let's listen to what some of these observers say. First thing is that the provincial government assembly has to approve a bill, and as of now, PMLN government moved the bill, which was for creating two provinces. One, Bahawalpur, which was the erstwhile Bahawalpur province, and the other one was Saraiki, or the southern province, including Multan and other districts. So from then, after that, obviously then it has to go to the federal government, and there it has to be approved. But the main issue is that if Punjab is divided into two or maybe three provinces, then the Senate representation of Punjab will increase to 3 times. So essentially the Punjabis will have three times as many senators compared to any other province. So that's where the bicameral system runs into problem, because Senate was created to provide a semblance of equality at the upper house. Essentially, you're saying that by creating more province out of Punjab, the Senate is going to have more senators from 3 different or 2 different Punjab, on the basis of fair representation based on fair number of provinces. So at the end of the day, you'll have more Punjabis as senators, and that might raise an eyebrow. So even if it crosses all the hurdles and you have more provinces out of Punjab, without making an equitable adjustment in the Senate, this might end up being a non-starter and a political issue. You're alluding to something, I call it design, build, and build, design as you go, keeping all the positives in a step direction on a roadmap, and crossing the hiccups as it appears, either by subsidizing the cost or co-opting with other provinces to fill in the gap, so that overall the new province can be a revenue generation administrative unit. This is taken care of in a roundabout manner, that the National Finance Commission Award, the criteria for allocating federal divisible pool resources to various provinces, not only caters the population but also the area. For example, Balochistan is the largest, and so area is taken into consideration. There is some factor associated with that, and then there is what is called backwardness. So backward, their low standing جو ہے لیسٹ ڈیولپمنٹ کی ول گیٹ دی ہائیسٹ پرائرٹی. تو وہ ایشو از میرا جو پرسنل ہے, وچ آئی مے بی رانگ. آئی ایم آلویز این ایڈوکیٹ آف a strong centralized planning with a proper vision. We should know 15 years from now where and which industry will come up at which place. Similarly, we must plan
which crop will be grown at what area and at what place. Similarly, the roads and your hydel stations and everything. So you need to have at least 20 years plan, have an agreement of everybody, so that क्या कहते हैं, the development focus is on least developed, but you also need to generate wealth. So the best avenue is to put an industry, say in Calabar, and that will give you the maximum. Similarly, mining, similarly, तो ये सारी चीज़ें, all provinces have their own strengths and weaknesses. तो जो competitive advantage जिसको जिस चीज़ में है उसको all the provinces should agree, and then so that nationally we are able to develop alongside with each other, and to a level where we have a coherence. उसके लिए political will and political and your ability as a leader and your ability to plan. One other factor is also that the resources are actually under the ownership of the provinces, and they have the right जिस तरह हाइड्रो प्रॉफिट मिलता है. तो इस सारी चीज़ को देखते हुए जो है फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करनी चाहिए. फिर लोगों की एस्पिरेशन भी देखनी चाहिए कि एथनिकली आप डिवाइड करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली डिवाइड करना चाहते हैं. तो ये दीज आर पॉलिटिकल डिसीजन. सो अगर एथनिसिटी पे डिवाइड कर दें तो फिर पीपल विल नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर. तो ये देखना पड़ेगा कि क्या कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कैसे किया जाए ताकि क्या कहते हैं जो डेवलपमेंट है वो ऑल राउंड हो. और साउथ पंजाब के पास जो है ना रिसोर्सेस क्या है इन टर्म्स ऑफ फूड एंड एनर्जी, ऑफ हैंड जरा बताओगे? how is this going to be self-sustaining, if it can be possible or no? It will be dependent on other provinces. शायद भी इनका दोनों का सेम है यार, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो चाहे वो साउथ पंजाब हो, दोनों की रिसोर्सेज ऑलमोस्ट सेम है. एग्रीकल्चर ही है इनकी और कुछ इंडस्ट्रियल है थोड़ा सा. इधर भी सेंट्रल में भी कुछ जैसे फैसलाबाद है, कुछ और जोन है जो इंडस्ट्रियल है. उधर हमारा रेमियर खान है और वहाँ पर आपको फौजी फर्टिलाइज़र भी मिल जाएगी. बहुत बड़ा बिजनेस है जो पूरे पाकिस्तान को, पंजाब को खास सप्लाई करता है. और आपका वहाँ पर कोका कोला है, वहाँ पर लीवर ब्रदर है. तो और भी बड़े बड़े, यानी कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन है बहुत बड़ा. और अभी सुनने में भी आ रहा था कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जो है ना उन्होंने अनाउंस कर दिया था लास्ट 4-5 ईयर्स पहले. तो उस पर भी काम चल रहा है. कुछ इंडस्ट्रियल जोन है, कुछ एग्रीकल्चर है. सेम है, मुझे तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नज़र नहीं आया रिसोर्सेज वाइज, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो चाहे साउथ पंजाब. अलबत्ता साउथ पंजाब में आपका गन्ना सबसे ज़्यादा होता है. कॉटन हमारा जोन है, सबसे ज़्यादा कॉटन वहीं पर होती है. और आपका जो शुगर मिले हैं सबसे ज़्यादा वो उसी साउथ पंजाब के अंदर है. तो जितने भी आपको माफिया की जो खबरें सुन रहे हैं इनकी ऑलमोस्ट सबकी वहीं साउथ पंजाब में शुगर मिले हैं. तो अगर बैठ के अगर इसको कंपैरिजन करेंगे तो हो सकता है साउथ पंजाब रिसोर्सेज में थोड़ा सा आगे निकले. ये साउथ पंजाब की क्या स्टोरी है? कैन यू हेल्प मी ऑन दिस? इसके अलावा साउथ पंजाब के पास क्या रिसोर्सेज हैं जो वो सेल्फ सस्टेनिंग बन सकते हैं, या क्या सिर्फ नेशनल फाइनेंस कमीशन के रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन से गुजारा करेंगे और सब्सिडी से? इसमें जो टेक है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. वो इस तरह से है कि साउथ जो है ना वो वहाँ पे एज पर डाटा अवेलेबल कोई बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ नहीं है. जो शुगर मिल्स की बात है तो शुगर मिल्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना है 8-10 मिलों का, उससे सूबा चलाना. और उसके बाद फिर ये है कि वहाँ के जो आप मेजर बात जानना चाह रहे हैं वो ये है कि कंटेंट एनालिसिस किया जाए कि वहाँ रिसोर्स पंजाब की निस्बत सेंट्रल पंजाब की निस्बत कितना है. तो सेंट्रल पंजाब तो आपको लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, रावलपिंडी और उसके साथ आपको साहिवाल, आपको यहाँ तक सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी. और उधर आपको सिर्फ एक रहीम यार खान में इंडस्ट्रियल स्टेट मिलेगा, बाकी आपको कहीं कुछ है नज़र नहीं आती है.
اور ریونیو وائز بھی سارا ایریا جو ہے ایگریکلچر لینڈ ہے، تو وہاں کچھ ایسا نظر نہیں آئے گا آپ کو کہ ایگریکلچر آپ کو بڑا زیرو ٹیکسیشن ہے. تو یعنی صوبہ بننے کا مسئلہ نہیں ہے، صوبہ چلانے کا مسئلہ ہے وہاں پہ. اور ابھی ایک رفٹ بہت بڑی چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ بہاولپور میں آئیں، وہاں اس کو ڈکلیئر کریں. کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ ملتان میں آئیں، وہاں اس کو ڈکلیئر کریں. تو اب جو شفٹنگ آف بیوروکریسی ہے اس میں ایک چیزیں جو ہے انتظامیہ وغیرہ کا آفس وہ ادھر بنا رہے ہیں بہاولپور میں، اور پولیس وغیرہ کا آفس ملتان میں بنا رہے ہیں. تو وہ بس ایسا ہی ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس سارے چیزوں کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے پیسہ بہت درکار ہوگا. اور موسٹ پرابلی بلکہ یہ یقیناً جو آپ نے بات کی ہے جو ایڈمیسبل پول ہے اسی سے ہی وہ چاہتے ہیں کہ اس کو چلایا جائے. اور اسی وجہ سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پنجاب کے تھوڑا وہ اس کے حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں کہ کیوں ہم اتنے پیسے جو ہیں وہ وہاں پہ لگائیں، سوائے اس کے کہ اتنا کیا جائے کہ ڈومیسائل ہی بنوانے ہیں لوگوں نے، اور وہاں پہ مقدمات کی سماعت کے لیے لاہور آنا پڑتا ہے. لیکن وہ بھی ملتان میں بھی بینچ موجود ہے ہائی کورٹ کا، اور بہاولپور میں بھی ہے. باقی چیزیں تو ساری وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ سارا سلسلہ ہے. تھینک یو.